नो मोर खड़ा हूँ आज भी मोमेंट गाइस। खड़ा हूँ आज भी को मैंने छूलो को मैंने अपने प्लेलिस्ट से ही निकाल दिया बिकॉज नाउ इज द टाइम फॉर ओनली चक द इंडिया एंड लहरा दो बिकॉज इंडिया हैज बीटन ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी गाइस। एंड लाइक नासिर हुसैन once said, in ODI run chases there is Virat Kohli, there's daylight, and then there's everybody else because that man is a genius. He is the superman and he's done it once again. मतलब विराट कोहली की जो कैलकुलेशंस है ना रन चेजेस में, मैं मैथ्स में बोर्ड एग्जाम्स में 99 लेके आया था बट मेरी भी इतनी अच्छी कैलकुलेशंस नहीं है जितनी विराट कोहली कैलकुलेट कर लेता है रन चेजेस में। एंड जॉइनिंग मी टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट इज संचित. A very short introduction about Sanchit. Sanchit is a huge Rajasthan Royals fan. He is a huge Arsenal fan. I'm pretty sure he must be very happy considering India भी जीत गए, Arsenal ने भी PSV को हरा दिया, 7-1 जीत गए. I'm pretty sure he'll be very happy. And just to tell you guys, Sanchit is one of the most passionate guys I've ever met regarding sports. मतलब इसका passion is nowhere near to what I am doing. भाई ये crazy बंदा है यार. So संचित, first things first, दो बैंटर क्लब्स को कैसे मैनेज कर लेता है यार सपोर्ट करने दो? ग्रेट ग्रेट फर्स्ट क्वेश्चन, बट सबसे पहले आई मीन थैंक यू फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने किसी के मुंह से आर्सेनल के बारे में प्रेस करते हुए सुना, स्पेशली फ्रॉम अ बार्सिलोना फैन। सो दैट इज समथिंग विच आई टेक फ्रॉम दिस इंटरव्यू। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन यार, मतलब अभी फिलहाल तो अच्छा ही चल रहा है। मतलब 7-1 विनिंग इन यूसीएल, मतलब दैट इज लाइक waking up in a dreamland. But yeah, really so happy with what happened yesterday. I mean, India Australia, जिसके बारे में हम डर रहे थे, like 19 नवंबर के बारे में, all those PTSD moments, but finally all of that has been put to rest. We are in yet another final and so excited for Sunday. तूने 19 नवंबर बोला ही है तो यू वर देयर एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम व्हेन द होल फियास्को हैपेंड. ये पूरा नैरेटिव चल रहा है कि रिवेंज रिवेंज रिवेंज. आई वुड वांट टू हियर इट फ्रॉम यू कि क्या ये रिवेंज हो गया 19 नवंबर का या देयर इज स्टिल समथिंग लेफ्ट? I mean, we are a country who loves Bollywood. We love a story with masala in it. हमें कुछ ना कुछ बैक स्टोरी पसंद है. But even that is a stretch, यार. I mean, yes, we want to say कि yes, it's a revenge. Finally, Travis Head को चुप करा दिया. Finally, 19 November is avenged. But in reality, अगर देखा जाए, it's not really a revenge. And I don't think anything can really be a revenge unless we beat them at MCG in a full sea of yellow crowd in a World Cup final where they have won 10 in a row and silence the entire crowd, because I don't think that is ever going to happen, because even if MCG में final होगा, इंडिया के आधे crowd वहां पे रहेंगे. So to call it a revenge on of what happened that day, it's a big uh, overstatement, I would say. But on the other side, मतलब winning against Australia in an ICC knockout doesn't come very easy. I mean, if you look at their record, in the last 15 years, they have only lost 3 times in an ICC knockout. And incidentally, एक funny stat बताता हूँ. The team who has went on to beat Australia in an ICC knockout has went on to win the trophy. Beat तो England in गाइस 2010 ट्रॉफी घर semi-final. आ रहा है. I'm not saying anything. I'm just going by the stats. क्योंकि जिंक्स नहीं मुझे कुछ करना है, but the signs are आई थिंक great. वन तो 2019 है एंड 2007 वाला भी है वेयर वी बीट देम इन द सेमीज इन द Yeah, टी20 वर्ल्ड कप. वन इज द 2019 even सेमीफाइनल 2000, yeah, 2012 semi-final also where West Indies beat them in the वेयर वेस्ट semis. इंडीज बीट देम. या वो Yeah, डैरेन सैमी वाला. yes. अरे The अच्छा signs are यार, good. अच्छा स्टार्ट बता दिया यार. अच्छा है. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रॉफी कमिंग होम दिस ईयर एज वेल. वापस से वानखेड़े पे परेड होगी, विक्ट्री परेड होगी. Yes. वेल, गेटिंग बैक टू द मैच. टॉस, वी लॉस्ट 14 इन अ रो राइट. मतलब मेरे Yeah. बंदी पटाने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बट रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत रहा भाई. उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है बिकॉज मैं तो प्रोबेबिलिटी 0.000 समथिंग हो गया. बट एट दिस पॉइंट आई डोंट माइंड इवन इफ यू आर लूजिंग द टॉस. इट्स ओके भाई क्योंकि हम मैच जीत रहे हैं. फाइनल में भी टॉस हार जाओ भाई रोहित भाई, आप हार जाओ टॉस, मैच जीत जाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई. Exactly. I mean, I read one tweet yesterday जब टॉस के बाद, I think किसी ने तो ट्वीट किया था saying that the probability of Rohit Sharma losing 14 tosses in a row, India losing 14 tosses in a row, is even lesser than a player taking hat trick like Damn. consecutively. ऐसे कुछ तो एक stat था which was very interesting according to me, because 14 tosses in a row, हम तो बचपन में statistics पढ़ते आ रहे हैं, probability के बारे में, chapter के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. And to watch मतलब 0.000% के मतलब रेंज में, it is remarkable. But as you said, yeah, मतलब जब तक मैच जीत रहे हैं तो क्या मतलब प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली Even in the एग्जैक्टली. finals, I'm not expecting us to win the toss, and that is the beauty about this team. We are not really worried about whether we are batting first, whether we are bowling first.
I mean, that is the beauty. I mean, it's really good to see. And one more important thing about Dubai is कि यहाँ पे ड्यू नहीं आती. So a team batting second does not have a clear undue advantage because of the due. So if you can play spin well, if you can ball spin well, then you are definitely in the game. And so far, India has done really that. So as you said, final में toss हारे जीते, it doesn't really matter now. मैच जीतो बस, टॉस तो ठीक है यार, चल जाएगा, माफ कर देंगे रोहित भाई को टॉस के लिए। But जब भी Travis, because when the inning started, obviously we got that first wicket very early, but Travis head was really looking good, मतलब वापस से वो लग रहा था कि मार के चला जाएगा। But this time we had वरुण चक्रवर्ती, केकेआर का मिस्ट्री कोटा से हमने लेके आया है वरुण चक्रवर्ती को, and incidentally that was the first ball Travis head was ever facing against वरुण चक्रवर्ती। एंड उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस, पहले ही बॉल पे मारने चला गया, बट वो भूल गया भाई कि हमारे पास जो मिस्ट्री बॉलर है ना, वो हमने लिया ही उसको इसके लिए कि ये तुमको इसका ही विकेट चाहिए भाई, ट्रेविस हेड का। एंड वहां से ही मतलब थोड़ा सा अपने गेम फेवर में आ चुका था। Although Steve Smith tried really well, I mean Steve Smith hats off here Hmm. for that innings of 70 odd runs. He was playing really well. But 265 odd, what was your early thought? Did you think कि first innings के बाद कि हाँ ये तो easily chase हो जाएगा? Because न्यूजीलैंड थोड़ा डिफिकल्ट था उनके लिए चेस करना। तो व्हाट वर योर अर्ली थॉट्स आफ्टर दैट फर्स्ट इनिंग्स? I mean, speaking about KKR, you mentioned about Travis Head bringing that mystery spell from Varun Chakravarti. Incidentally, KKR के सामने Travis Head का record is not really that good. The last three times he faced against a KKR bowler, including the IPL, he has not scored even one run. Qualifier two एग्जैक्टली। final and today. So he is really having a tough time against KKR. But to answer your question, 260 के ऊपर यार सच्ची बताऊं, I was really मतलब sweating to be very honest because as we आई saw मतलब जस्ट टू chasing टेल यू गाइस, chasing में आई एक्चुअली सॉ संचित ट्वीट एंड ही वाज लाइक यार 260 तो नहीं हो रहा, चेज भाई हो गया। एंड मेरा भी सेम थॉट है, नहीं हो रहा भाई 260 इस पिच पे, मुझे नहीं लग रहा है चेज होने वाला है। एग्जैक्टली मतलब सच्ची टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 225 टू 250 टू बी चेजेबल एंड एक पॉइंट तक ऐसे लगा भी था कि 250 के नीचे ले लेंगे व्हेन आई थिंक दे वर six down for 200 odd, but then that partnership from Carey and Vasquez, I think that was what it took them towards that 260 mark. तो तभी at that moment I really thought कि यार थोड़ा difficult होगा because knockout game है, ऑस्ट्रेलिया है, they always turn up with the ball, and no matter what the squad that they have, they always turn up in this kind of situation. तो थोड़ा डर तो था, and when we lost two early wickets, यार तभी तो मतलब ऐसे लगा था कि हो गया खड़ा हुआ आज भी वही अभी लगाना पड़ेगा प्लेलिस्ट पे. बट आई थिंक वो जो 260 था, दैट कुड हैव बीन 280 285 इफ नॉट फॉर श्रेयस अय्यर का रन आउट, बिकॉज Absolutely. दैट वाज द गेम चेंजर। अगर अगर कैरे वो लास्ट का 2-3 ओवर्स खेल जाता तो आई एम प्रीटी श्योर दे वुड हैव इजीली गॉट टू 280। वो श्रेयस अय्यर एंड ही डिड गेट हिज फील्डिंग मेडल एज वेल। तो श्रेयस अय्यर नॉट ओनली विद द बैट बट इज कंट्रीब्यूटिंग विद द फील्ड एज वेल। आई जस्ट रेड अ ट्वीट कि केएल राहुल ने कल 65 रन बनाए, 45 तो उसके बैट से, और 20 रन जो फील्डिंग से बचाए है ना उसने, वो भी है उसके। एब्सोल्युटली मतलब वो जो मूवमेंट था आई थिंक दैट डिजर्व्स टू बी कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवमेंट. मैंने उसके ऊपर स्टोरी भी डाली मेरे इंस्टाग्राम पे कि दैट मोमेंट अभी मतलब जब हम बात करेंगे मैच के बारे में, विल टॉक अबाउट कोहलीज इनिंग्स, विल टॉक अबाउट केएल्स फिनिशिंग, अय्यर्स इनिंग्स विद द बैट, but very rarely we'll talk about that moment to get carry out. And as you mentioned, 20-30 runs in that final phase, it could have been game over. मतलब chasing 280 290 and being two down before 50, that could have been curtains for Team India in terms of like looking at the bigger picture. But Shreyash Iyer, yeah, मतलब yes, time and again proved what an asset he is. World Cup में भी काफी अच्छी performance की थी. And I remember Australia के एक interview में उन्होंने कहा था कि they planned so much to take Shreyash Iyer's wicket in that final. And that actually shows what kind of an impact he's had. And yesterday he has shown once again what an asset is. मतलब एक टाइम पे विघ्नेश मुझे याद है हम ये बात करते थे कि इंडिया का नंबर 4 कौन होगा. So many tournaments we एग्जैक्टली actually went यार, by and said मतलब कि यार नंबर वी 4 हैव कौन है. नॉट वी हैव नॉट फाउंड द नंबर 4 सिंस 2019। मतलब तब से वो वर्ल्ड कप से चल Exactly. रहा है ये डिबैकल की कौन बैटिंग करेगा। 5-6 लोग ट्राई कर लिया, देयर वाज अ फेज रहाणे बैटिंग करा था, देयर वाज केदार जाधव हु बीन ट्राइड आउट, देयर वाज मनीष राइडू. पांडे, देयर वाज अंबटी रायडू। सो कितने लोगों को ट्राई कर लिया है यार, एंड फाइनली जाके वी गॉट आवर प्रॉपर नंबर 4 बैट्समैन यार। मतलब ही इज अ प्रॉपर एसेट, जो हम बात ही नहीं करते। लाइक जब भी वो प्रॉब्लम ये होता है कि वेन एवर अय्यर प्लेज अ गुड नॉक देयर इज समवन एल्स हु ओवर शैडोज हिम, तो बातें उसकी ही होती है। Exactly. बट आई थिंक इट इज हाई टाइम नाउ दैट वी स्पीक अबाउट श्रेयस अय्यर एज वेल। न्यूजीलैंड के सामने भी दैट क्लच नॉक,
took us to 250. आज again when 2 wickets we were down, very good partnership, and वो partnership भी बहुत सही था. I think this is what we Absolutely. needed on 19 November as well, because वो जिस तरह से वो लोग दोनों स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे ना, वो they might have not got those boundaries, but I think वो सिंगल डबल जो चल रहा था ना, Yeah. वही वही पे वो लोग ने गेम कैरी कर लिया था. So getting back to the second innings जो था, the start obviously we lost Shubman Gill very early, and Rohit Sharma का I remember they dropped two catches of Rohit Sharma. एक वाला कैच वो तो लिटरली मुझे फ्लैशबैक पीटीएसडी हो गया, मेरे दिमाग में आ गया भाई, ट्रेविस हेड वाला सेम टू सेम, वो रनिंग पीछे जा रहा है अपना लाबुशेन, सेम एंड वो लोग मैच वो कैच के बाद दिखा भी रहे हैं वो कैच की, सी दिस वाज अ रिपीट. मैं बोला यार मत दिखाओ यार, ये तो मुझे नहीं देखना है यार, यही तो नहीं देखना है. बट I रोहित mean, शर्मा यार भी. नहीं नहीं, बोल बोल yeah, बोल. एग्जैक्टली आई मीन जैसे तूने बात किया कि अबाउट दैट 2023 फाइनल वाला, इवन द मैच, द सेकंड इनिंग स्टार्टेड ऑन द एग्जैक्ट सेम नोट. मतलब नॉट जस्ट अबाउट द कैच ड्रॉप, बट इवन आई थिंक इंग्लिश लेटिंग गो वन बाय हिज, मतलब पीछे से फोर गया था, जैसे केएल राहुल ने आई थिंक के ही राहुल का मिसफील्ड हो मिस्ड अ गया था. लॉट ऑफ चांसेस. एग्जैक्टली, तो वैसे ही कुछ स्टार्ट हो गया था, एंड देयर वर सो मेनी पीपल ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप सेइंग कि इज दिस साइंस, इज दिस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू ऑस्ट्रेलिया, जो हमें हमारे साथ हुआ था, इज दिस karma. And when that ball went into the air, मुझे मुझे I don't know, just unconsciously वही याद आया कि okay, what ट्रेविस हेड नहीं होना चाहिए, ट्रेविस हेड नहीं होना चाहिए, and exactly same situation nearly वही था. And then when Labuschagne dropped that catch, I felt at that moment कि maybe this is science. नहीं नहीं, लक वाज ऑन आवर साइड दिस टुडे, मतलब यस्टरडे, बिकॉज वो साइंस था एज यू सेड. मतलब दीज आर द चांसेस व्हेन वो कन्वर्ट होते हैं ना, तो वो एक टीम डोमिनेट कर जाता है ऐसे सिचुएशंस में. तो वो एक कैच ड्रॉप आई गेस दैट शोड अ लॉट ऑफ अस कि यार आज शायद अपना दिन है. उस दिन शायद नहीं था, बट आज तो अपना दिन है बॉस. Yeah. क्योंकि उसके बाद दे ड्रॉप द कैच ऑफ कोहली एज वेल. बट स्पीकिंग Hmm. अबाउट कोहली, मतलब टाइम एंड अगेन ही प्रूव्ड इट दैट ही इज द चेज मास्टर. Again, Kal, we were 2 wickets down early in the innings, and then the way he has built that innings. Now, this might not be a lot of runs. He only scored 5 boundaries, but those singles and doubles, by see, he's not let his strike rate go down. The strike rate Exactly. is still 85-90 का strike rate. So वो जो सिंगल डबल के साथ वो प्रॉपर स्ट्राइक रोटेट करके वो प्रेशर जो बिल्ड किया ना मिडिल ओवर्स में, दिस इज व्हाट विराट कोहली डज एट हिज बेस्ट. मतलब कल प्राइम विराट कोहली वाली वाइब आ गई यार वो देख के इनिंग्स. Absolutely. I mean, to talk about Virat Kohli, I mean, the more we talk, the lesser it is. मतलब इतना उनका impact है, and especially in ICC events, ODI knockouts के बारे में हम बात करते हैं. If you talk about Champions Trophy, his record in this tournament is so good. I think this is his third consecutive 50 plus score in an ICC Champions Trophy semi-final. And that Yes. just shows कि जब pressure आता है, जब नाम बड़े होते हैं, तभी विराट कोहली steps up. And yesterday's innings, यार, मतलब from a situation that we were in, and again facing Australia in a knockout, to play that kind of an innings. Yes, matlab it wasn't for one for the highlight reels where he scored lots of boundaries and sixes, but those ones and twos, that partnership which he had with Shreyas Iyer, I mean, too good. Yeah, that reminded me of his innings in Chennai that he played against Australia, first match of World Cup. Similar situation, tha, Similar difficult situation, conditions. yes. Exactly. And that shows कि यार मतलब Kohli can do all kinds of chases. And that is exactly what we need from our number three batter. So happy. But unfortunately, यार मुझे वो ऐसे fairy tale वाला 100 चाहिए था. But unfortunately, it couldn't happen. But that 80 odd runs was nothing short than 100. मतलब if we talk about that impact, so good. नहीं नहीं, इवन राहुल का जो रिएक्शन था व्हेन कोहली गॉट आउट, यार वो भी मतलब इतना अंदर से अरे यार मैं मार रहा था ना, क्यों मार मारने जा रहा रहे हो. था, yes. मतलब वो देख के मेरा दिल आ गया है, बोला यार एक्चुअली यार राहुल वाज एक्चुअली प्लेइंग द एक्सेलरेटर, बिकॉज ही न्यू कि कोहली एक एंड पे स्टेबल है, तो मैं तो मार ही Hmm. सकता हूँ दूसरे एंड से. एंड स्पीकिंग अबाउट केएल राहुल, ऐसा रिडेम्पशन, मतलब अगर भगवान डाउनफॉल दे तो कमबैक भी केएल राहुल जैसा दे दो भाई. बिकॉज वो सारे मीम्स की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं खेल पाया और 19 नवंबर वही सेम ओपोनेंट, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, स्कोरबोर्ड प्रेशर है, चेस करना है. अब तो विराट कोहली भी जा चुका है, एंड देन वो जो सिक्सेस लगाए उसने, जो उसने कल इनिंग्स खेली है ना, एंड यू कुड सी व्हेन ही स्कोर्ड दैट विनिंग रन्स, वो जो एग्रेशन निकला ना. राहुल इज नॉट समवन जिसका ज्यादा एग्रेसिव नेचर तुमको देखने Yeah. मिलेगा, बट कल उसका भी एग्रेशन बाहर आ गया था यार. मतलब वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार इसको भी अपना एक रिडेम्पशन आर्क मिल गया है यार, कि हाँ फाइनली स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. Absolutely. I mean, even if you look at his interviews after that final, when I think
there was an interview with Star Sports where he said that Yes, yes, if he yes. could go back in time, he could change what had happened then, and that actually shows कि वो वाली innings, वो वाला match कितना impact हुआ है उसके ऊपर, and even the criticism that he faced regarding that knock, to come out to this stage, same opponents in a knockout, ICC knockout, and to deliver what he did. Yeah, मतलब I tweeted yesterday also कि this is the time for KL Rahul to finally redeem himself. And ऐसे भी नहीं था कि he was batting in a good form. Before this innings, he Exactly. was not really hitting that well in ODIs, I think, right from the England series. So this was his moment to actually turn the odds to his favor, and he did that. मतलब जो sixes उसने मारे हैं, especially after Kohli got out, ऐसे डर लग रहा था कि यार अभी कोलैप्स ना हो, अभी कोलैप्स ना हो, बट राहुल, आई मीन टू गुड यार, एंड इट रियली फील्स हैप्पी कि जब ऐसे कोई प्लेयर आके खुद को रिडीम करता है, especially in such a big game. So really happy, and it was so fitting that he was the one to hit the winning runs. And obviously, finisher Pandya was there as well. So with Yeah. Pandya on the crease, how can we lose a match? वो he was waiting for Zampa का ओवर कि कब Zampa का ओवर आएगा, एंड Zampa ने 2 बॉल उसको स्लॉट में दिया, एंड वो प्रॉपर जयशा के पास भेजा है उसने बॉल को, भाई सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सिक्स मारा है। एंड वो भाई वहीं पे फिर गेम फिनिश हो गया था, ऑल्दो ही कुडंट फिनिश द इनिंग्स, बट आई थिंक वो जो फिनिशर वाला रोल पांड्या खेल रहा है ना, आई थिंक टीम काफी सॉर्टेड लग रहा है यार, मतलब एवरी प्लेयर इज इन हिज फॉर्म यार, मतलब ऐसा एक भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि यार इसका थोड़ा सा फॉर्म का थोड़ा प्रॉब्लम चल, एक्सेप्ट मे बी कुलदीप यादव, बिकॉज ही वाज हैविंग एन Hmm. ऑफ डे। बेचारे को कोहली और रोहित दोनों से गाली पड़ रही है। Exactly, exactly. सो I mean, a bit about Pandya. Just a bit to add about Pandya. जब Pandya crease पे आए थे, many people were saying कि even I was worried कि what is it doing dot balls against pacer. I think there was one over where he just scored one run नेथन of a एलिस के pacer. I think सामने। Ellis था बोल, हाँ Ellis के सामने. But he was calculating. I think you mentioned about calculated innings, and I think Pandya की जो innings थी वो भी काफी calculated. He was waiting. He knew that Smith would bring in Zampa's over, and that was when he pounced. So Hardik Pandya, the way that he bashes spin, I think is such an asset to have for us. नहीं यार, मतलब अब प्रॉपर सेटल्ड लग रहा है टीम, बट स्टिल डू यू थिंक गोइंग इनटू द फाइनल्स शुड वी ऐड एन एक्स्ट्रा पेसर और शुड वी जस्ट गो विद द सेम 11? It's very difficult to say. I mean, I'm someone who feels that why change a winning combination? एग्जैक्टली। Why fix something which is not broken? But जैसे जैसे तूने कहा कि कुलदीप के बारे में, I mean, he is someone who is a momentum confidence kind of a bowler. When confidence is with him, then he thrives. But when momentum is not with him, then somewhere you feel that he's getting exposed at certain situations. And knockouts में अगर देखें, even in the final that we won last year against South Africa, he wasn't really having a good day with the ball. So somewhere I feel that if India is tempted to bring in an extra pacer just to bring control over the game, then maybe Kuldeep could be the one uh, getting axed from that playing 11 side. But according to me, I think we should play with the same 11. Kuldeep is someone I think if अगर constant backing उसको मिलती गई, and I think I'm sure that the team management will do that. अगर उसको प्रॉपर बैकिंग मिल रही है कि बॉस कुछ भी हुआ, इट्स ओके, यू आर स्टिल आवर प्राइमरी स्पिनर, एंड वी वांट यू टू गो इनटू द फाइनल एंड प्रूव पीपल रॉन्ग. जैसे हमने केएल राहुल के बारे में बात की, ही रिडीम्ड हिमसेल्फ. सो समवेयर आई फील दैट कुलदीप कैन आल्सो डू दैट. So even if you face South Africa, even if you face New Zealand, he can be the one to change the game for us. And I feel that we should go with the same 11. Kuldeep will come good. नहीं बट we know the kind of captain Rohit is, and he likes to back his players. मतलब he's someone who doesn't like to change a winning combination. अगर सब कुछ सही चल रहा है तो why make a change in it, and फालतू का वो भी going into a final, मतलब यार बड़ा मैच है, सो Exactly. बड़े मैच के पहले तुमको एक प्लेयर को बिठा के नए प्लेयर को लाना, वही विनिंग कॉम्बिनेशन। तो इवन आई डोंट फील कि देयर विल बी एनी चेंजेस गोइंग इनटू द फाइनल। रोहित इज समवन हु स्टिक्स टू हिज 11, ही हैज दैट फिक्स्ड ये कि भाई ये बंदे रिजल्ट दे रहे तो इनसे ही रिजल्ट निकलवाना है फाइनल में भी। But second semi-final, New Zealand versus South Africa, I think that is going to be a mouth-watering contest as well, because the last time we had that semi-final in 2015, we knew what happened. Grant Elliott ka six against Dale Steyn. So South Africa has that revenge angle as well, just like us. So फिर, who would you want in the final, South Africa or New Zealand? It's a tough one, Vignesh. I mean, I was also asking this. मैंने कल एक poll डाला था to hear what others are feeling, and majority of them said कि यार कोई भी आए, it's okay, we can take down any team. But personally, from a cricketing point of view, it is very difficult to actually set them apart because South Africa, as we know, they have been a great side in ICC events in the last few years. New Zealand, always the dark horses.
They always somehow turns up in an ICC event. And just say you mentioned about 2015 semi-final, that was one of the classic from ICC events. And अगर वैसे ही कुछ match हो, then we have a treat on our hand. But personally, I would love India to face South Africa again, because somewhere I feel कि न्यूजीलैंड ने जो दुबई में मैच खेला था recently against India, they will know exactly what to expect in that final because they have already played there. But if South Africa comes, it will be a completely new condition for them. जैसे न्यूजीलैंड का हुआ था in 2015 World Cup. They played all their matches in New Zealand, and जब final आया, they played in MCG, where they somehow just couldn't adjust to the conditions pretty well. And Australia played all their matches in Australia. They just went through the New Zealand batting line. So somewhere I feel, from an Indian point of view, I would love South Africa to come and just test them with these conditions out. नहीं नहीं एग्जैक्टली मैन सेम एग्जैक्टली सेम थॉट मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू से द सेम थिंग जो तूने बोला है यार बिकॉज न्यूजीलैंड को पता चल चुका है कि व्हाट द कंडीशंस आर सो आई वुड नॉट वांट मतलब या फ्रॉम अ क्या बोलते हैं मैच पीओवी दो इक्वल टीम्स मजा ही आएगा बट देन इफ आई वांट इंडिया टू विन आई वुड ऑब्वियसली वांट साउथ अफ्रीका टू बी इन द फाइनल्स बिकॉज एकदम ही अलग कंडीशंस होने वाले दे नॉट प्लेड अ सिंगल मैच इन दुबई वो लोग ने पूरा पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक्स पर अपने मैचेस खेले अभी तक सो दुबई इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द Hmm. पिचेस आर इन Lahore, Karachi, and Rawalpindi. So it's going to be a completely different experience for them as well. So I feel yes, South Africa versus India finals, and considering I feel even South Africa and New Zealand का matchup भी देखेंगे, I do feel like South Africa has a bit of an upper hand Yeah. than New Zealand, although very equal. But यार मुझे लग रहा है कि South Africa will win this game, win this semi-final, and India versus South Africa final Once 2024 again. T20 वर्ल्ड कप एक तो मुझे डर इस बात का है साउथ अफ्रीका के पास वहां पे भी रिवेंज एंगल है उनके पास हर टीम के साथ एक रिवेंज एंगल है तो This वो Champions लोग भी Trophy is काफी all about revenge. मतलब उनके भी कोई एडिटर्स एग्जैक्टली रहेंगे जो दास्तां है इसके ऊपर रील्स बनाते होंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच. नहीं नहीं उनके लिए भी तो मतलब रीसेंट मेमोरी है कि वी वन अगेंस्ट देम फिर वो स्काई का कैच जैसे हमारे लिए हेड का कैच है उनके लिए स्काई का कैच है Exactly, तो yeah. yes India even I want an India South Africa final but let's just hope one more match for the trophy to come home and Marine Drive and Wanted पे विक्ट्री परेड फिर से होगी Exactly, yeah. मैंने मतलब मैंने so we are so near, yeah. अब नहीं यार अब तो ट्रॉफी लेके ही आना है मतलब वो क्या बोलते हैं बिकॉज वी डोंट नो कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल दे प्ले द 2027 वर्ल्ड कप वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क मे बी Hmm. विराट कोहली फिर भी खेल ले बट रोहित शर्मा पता नहीं इट्स अ वेरी क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ अ थिंग सो यार अगर ये लास्ट है तो यार जीत के जाना है एंड स्पीकिंग अबाउट रोहित शर्मा 4 consecutive आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल्स एज अ कैप्टन and also the first ever captain to lead his team in all the 4 ICC events. तो रोहित शर्मा के लिए भी एक क्रेजी सैल्यूट तो बनता है यार बिकॉज द काइंड ऑफ लीडरशिप इज शोन थ्रू आउट यार मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ गेम इन द 2023 वर्ल्ड कप द अनबीटन रन विच वी हैड सो एक फेरी टेल फिनिश तो वो भी डिजर्व करते हैं एंड आई डोंट नो इफ यू सीन दैट फोटो ऑफ रोहित एंड विराट 2013 में वो व्हाइट कोट पहन के दे हैव दैट फोटो चैंपियंस ट्रॉफी बीच में है यार वो कैसे तो करके बीसीसीआई तक वो फोटो पहुंचा दो और उनको बोलो ये हमको रिपीट करवा के चाहिए ये सेम फोटो करवा दो यार बस ये एक छोटा सा इच्छा है मेरा तो बस Exactly, yeah. मतलब to talk about Rohit Sharma's impact, 2023 World Cup was his tournament. Let's be very honest. Irrespective of whatever happened in the final, वो काफी मतलब hurting था, but that doesn't really define his legacy. And he came back a year later, and against all odds, जिसके बारे में बात करते कि whether they should play the T20 format or not, he came back, performed with the bat, and won us the T20 World Cup once again here in Champions Trophy, taking us to yet another final, and I think the first captain to be in all the finals of ICC events. That is really remarkable. And यार मतलब इतना इमोशनल होता है कि we are so close and he could really establish himself as one of the greatest captains in the world, not just Indian captains, but one of the greatest captains in the world. So एग्जैक्टली hopefully that मतलब happens. व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो आई फील रोहित शर्मा इफ ही विंस द चैंपियनशिप ही इज राइट अप देयर along with Ricky Ponting along with MS Dhoni because Definitely. there are not many people who won 2 different ICC trophies चलो Ricky Hmm. Ponting and MS Dhoni are in a completely different league but Rohit Sharma could join them if this champions trophy comes home in under his captaincy so fingers crossed one last hurdle one last push Sunday champions trophy final we will be there watching it drop down your comments drop down your comments saying what is your preferred finalist would you want South Africa would you want New Zealand and
that's it for this podcast and thanking you again Sanchit यार very short notice पे join किया है संचित ने so thank you thanks a lot यार and Always, definitely we'll always. have another session very soon hopefully I hope you had a great Definitely. time यार. Definitely. I mean, it's always good to talk about cricket when India wins, especially in such a big game. So hopefully we'll join again on a different note, if not podcast, on a different note after we lift the trophy on Sunday. Yes, sure. Hopefully we'll meet at Marine Drive and Wankhede when the Yeah. trophy parade happens. Definitely, bro. Chalo, chalo. Thank you, yeah. Thanks a lot, yeah. Thanks a Bye. lot.